Assalamualaikum dear students. Today we have a very nice session of learning modifier. That what is modifier and how can we use this word in our sentences. We make mistakes when we start speaking, but we don't care about the mistakes. But the wise one is that who catch his mistake and does not repeat his mistakes again and again. And it will be done just by following the rules of modifier. So when you are following the rules of modifier, it means you are learning and you will be learning so many things by this word. So let's learn the definition of modifier, that what is modifier and how can you use this word in a sentence. So first of all, you will have to learn this word OCAP, OCAP. What is the meaning of OCAP? It means omit, change, adding, placing. Okay, this is my definition, but you can bring your own definition too, because so many people, so many voice people have made their own definitions, so that's why you can match. So what is the meaning of modifier? It means simple meaning that will additional information or omitting the meaning or changing the meaning or placing the sentences or placing the words. Fine. So if you are modifying the sentence, it means whether you will be changing the word or you will be omitting some words, you will be adding some words, or you will be passing some words. Okay, it means that you will have to follow the rule. You will have to follow this rule. But if you are getting and learning this word, that modification or modifying your sentence, and you're not following the rule, it means that you are actually making mistake. So that's why you will have to overcome on your mistake by following this rule. What is modifier actually? Modifier can be a word, phrase, clause, which modifies other words in the sentence. Okay? Or you can say, in a very simple way, that modifier can be either adjective or adverb. Because if you want to add something in adjective or an adverb, it means you are modifying the sentence. Fine? So now we have the very first example, and I hope that you will learn the meaning of modifier by this example. If you have a glance, so the very first sentence is giving you the meaning. The pretty girl walked over to the counter. Now, what to do? You will have to add up something in the sentence because you people have learned the very first thing, that additional information. So now let's say that what is additional information here. If you find the second meaning, if you learn the second sentence, so the second sentence is giving you this meaning, that the very pretty girl walked over to the counter. So now the pretty girl means that well, एक खूबसूरत सी लड़की walked over to the counter. अब यहाँ पर जो है उसकी मजीद तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा, the very pretty girl. सही, very pretty girl, इसमें adjective में थोड़ा सा इजाफा हुआ, तो यहाँ पर आपने adjective में क्या किया, adjective को modifier के जरिए से चेंज किया. So the very pretty girl walked over to the counter. अब अगर सपोज आपको मजीद इसमें इस जुमले में इजाफा करना है, तो आप इसमें मजीद इजाफे के लिए कुछ ये भी कर सकते हैं. The very pretty girl walked quickly over to the counter. So now quickly is actually the additional part of the verb. It means it is an adverb. अब आपने walked जो था हमारे पास verb था, उसके साथ एडिशनल पार्ट एडवर्ब को जब मिलाया, तो ये भी आपने जुमले में मॉडिफाइंग मतलब मॉडिफायर को लाया. ठीक है, तो जब आप मॉडिफायर को लाते हैं तो आप जुमले में कुछ ना कुछ चेंजिंग को करते हैं, तो उस जुमले में चेंजिंग करने को हम कहते हैं मॉडिफायर. ओके, नाउ इफ यू से that there we have two sentences, one is incorrect and second one is correct, but let's learn that why this sentence is incorrect. When we speak sentences, when we speak sentences in our conversation, so we don't feel that we are making a mistake, but the audience can realize if they are good, if they are good speakers, so that time they can realize our mistakes. So if you just have a glimpse of this sentence, so the sentence is giving you this meaning. You heard her when she whispered clearly. आपने उसको सुना जब वो साफ गोई में जो साफ साफ जो है विस्परिंग करती है. विस्परिंग का मतलब क्या होता है कि सरगोशी करना. अब जब सरगोशी साफ साफ हो तो वो तो सब कुछ सुनाई देगी, तो इसीलिए इस जुमले में ये गलती है. अब आपको करना क्या है कि इसमें गलती को दूर करना है.
आपको करेक्ट सेंटेंस ये बता रहा है कि यू हर्ड हर क्लियरली व्हेन शी विस्पर्ड। आपने उसे साफ साफ सुन लिया जब वो सरगोशी कर रही थी, मतलब वो नहीं बताना चाह रही थी कि क्या कर, वो चुपके से जो है वो बात करना चाह रही थी। सो आई होप दैट दिस सेंटेंस हैज गिवन यू क्वाइट क्लियर मीनिंग। ओके, अब दूसरा जुमला देखें, इनकरेक्ट सेंटेंस वंस अगेन। शी लर्नड इट व्हेन शी स्टार्टेड ड्राइविंग। उसने सीख ली जब उसने गाड़ी चलाना शुरू की। तो उसने सीख ली जब उसने गाड़ी चलाना शुरू की, मतलब कितनी बार एक्सीडेंट हुआ होगा, कितनी बार जो है वो प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये जुमला कुछ गलत मीनिंग दे रहा है, क्योंकि उसने कैसे सीखी, जब उसने शुरू की गाड़ी चलाना। सही, जब गाड़ी चलाना शुरू की सीखी। तो इसीलिए जुमले को कुछ इस तरीके कहें तो आपको मॉडिफायर नजर आएगा इस जुमले में। वो ये है that she started driving after learning it। देखिए, हमने अपनी तरफ से कुछ वर्ड को ऐड किया है, इसको हम कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है? शी स्टार्टेड ड्राइविंग आफ्टर लर्निंग इट। उसने गाड़ी चलाना शुरू की, लेकिन कब शुरू की? आफ्टर लर्निंग, सीखने के बाद। ओके, सीखने से पहले ही अगर वो गाड़ी चलाना शुरू करती तो जाहिर है कितने लोगों को मारती, वो आपको कुछ पता होना चाहिए। ओके, so now here I hope that these sentences has given you quite clear meaning. So now what we are learning, we are going to learn misplaced modifier। misplaced modifier को पहले समझिएगा कि ये होते क्या है। misplaced modifier का मतलब यही है कि वह उनकी जगह सही होनी चाहिए। मीन जिस जुमले से, अगर वो ह्यूमन बिहेवियर है तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ ह्यूमन बिहेवियर वाले जुमले ही होने चाहिए। अगर वो नॉन ह्यूमन बिहेवियर वाले जुमले हैं, उनको अपने ह्यूमन बिहेवियर के साथ कर दिया तो वो जुमले का मतलब गलत देंगे। ठीक है, सो नॉन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर दोनों को साथ रखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा काम ह्यूमन बिहेवियर का है, कौन सा काम नॉन ह्यूमन बिहेवियर का है। ठीक है, कौन सा काम जो है वो नॉन ह्यूमन है बिहेवियर है और कौन सा काम ह्यूमन बिहेवियर का होगा। लेट्स सी, I saw three bears on the way to class. Okay, so now do you think that this sentence is correct? It is giving you correct meaning. I saw three bears on the way to class. मैंने तीन bears को रास्ते में देखा क्लास में जाते हुए। अब क्लास में कौन जा रहा था, आप या bears? So it is a bit confusing. Who were well on the way to the class? ठीक है, कौन जो है क्लास के तरफ जा रहे थे? This is one of the biggest mistake which we found in this sentence. So अब हमें देखना है कि well ये जो क्लास में जाना है, ये ह्यूमन बिहेवियर काम हो सकता है या नॉन ह्यूमन बिहेवियर काम हो सकता है। तो टू क्लास मतलब ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, नॉन ह्यूमन बिहेवियर नहीं हो सकता। तो अगर हमें जुमले में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऑन द वे टू क्लास आई सॉ थ्री bears। ऑन द वे टू क्लास आई सॉ थ्री bears। ओके, या इसको थोड़ा सा और अच्छे करके लिखते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखा आप, लेकिन मैं कह सकता हूँ आई सॉ, ठीक है, थ्री bears। ठीक है, where I was going toward the class। तो ये भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप जुमले को कंसाइज करें। सही, तो इसीलिए आपको जुमला समझ आना चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि शायद बेयर्स जो है आजकल क्लासेस ले रहे हैं इस कोरोना, इस क्वारंटाइन में। फाइन, तो शी नियरली कॉम्ड हर हेयर फॉर 10 मिनट्स एवरी नाइट। नाउ उसे तकरीबन जो है अपने बाल कंघी कर लिए थे 10 मिनट तक। ठीक है, एवरी नाइट मतलब हर हर रात कर लिए। अब यहाँ पर एक मसला है वंस अगेन, दैट शी ऑलमोस्ट कॉम हर हेयर बट नॉट। क्या उसने अपने बाल पूरे तरीके से कम कर लिए थे, नहीं किए थे? Okay, it means now it is a bit confusing that you know what is a right sentence। तो अब हम इस जुमले को कुछ ऐसे लिखते हैं that she combed her hair, उसने अपने बाल कंघी कर लिए थे for nearly 10 minutes। ठीक है, 10 मिनट तक, तकरीबन 10 मिनट every night। सही, तो यहाँ पर इस जुमले ने आपको बिल्कुल सही मतलब दिया that you know well now you have just placed the word nearly from wrong place to right place। So your sentence has given you complete meaning and good meaning। अब थर्ड जो जुमला है उसको भी देखना है। They watched the sunset sitting on the porch। अब सपोज भाई जुमले को जरा जल्दी कहता हूँ, They watched the sunset sitting on the porch। अब यहाँ पर एक जुमला, ये जुमला मुझे कंफ्यूज कर रहा है। Who was sitting on the porch? The sunset was sitting on the porch। Who was? Okay, is it a cartoon that the sunset was sitting on the porch? क्या ये कार्टून है कोई कि सनसेट जो है वो पॉट पे बैठा हुआ है? तो इसीलिए इस जुमले में गलती है कि ये ह्यूमन बिहेवियर का काम हो सकता है या नॉन ह्यूमन बिहेवियर का। तो हमें पता चला कि ये नॉन ह्यूमन
ह्यूमन बिहेवियर का काम नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का काम है सिटिंग ऑन द पॉच। तो हम इस पूरे फ्रेज को, ठीक है, क्लॉज को जो है हम एक तरफ ले आते हैं ताकि हमारे पास ये जुमला सही मतलब दे। लेट्स से सिटिंग ऑन द पोर्च दे वॉच सनसेट। अब आप देखेंगे सिटिंग ऑन द पोर्च ह्यूमन बिहेवियर काम है, तो इसलिए आपने उसको प्लेस किया बिल्कुल दे के साथ। ओके, सिटिंग ऑन द पोर्च दे वॉच सनसेट। देखिए पोर्च पे बैठे हुए, दे वॉच सनसेट, वो लोग जो है उन्होंने सनसेट को देखा। Fine. So I hope that this sentence is also clear and it has given a complete meaning. Okay, now we have some more sentences waiting for us. This time we have to correct these all sentences, because if you want to rectify your sentences, your English, so you will have to correct your incorrect sentences which you had mad in your speaking thousand times, and you people were habitual of making these mistakes, but you were not concentrating on them. तो यहाँ पर कुछ जुमले और हैं। He threw the ball to the girl mad of orange rubber. अब हम यहाँ पर दोबारा से कंफ्यूज हैं। Okay, he threw the ball to the girl mad of orange rubber. Orange rubber से कौन बना हुआ था? Orange rubber से कौन बना हुआ था? Orange rubber से घर बनी हुई थी या ball बना हुआ था? Now let's correct the sentence that he threw the ball to the girl made of orange rubber. So it means that you personally believe that girl cannot be made of orange rubber. Yes, the ball can be made of orange rubber. आपको ये पता होना चाहिए कि फिर गर्ल ऑरेंज रबर से कैसे बनी होगी भाई। तो बॉल बन सकता है, तो हम कह सकते हैं दैट ही थ्रू द बॉल। सही, बॉल की खासियत हो सकती है कि वो ऑरेंज रबर से। तो ये पूरा जो क्लॉज है, पूरा जो हमारे पास क्लॉज है, इसको हम ले आते हैं नॉन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जो नॉन ह्यूमन बिहेवियर के वर्ड्स हैं उनके साथ। तो ही थ्रू द बॉल मेड ऑफ ऑरेंज रबर टू द गर्ल। ओके, नाउ आई होप दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल। यस, कुछ समझ आ रहा है, ये वाकई जुमला हमें सही मतलब दे रहा है। So now let's learn the word. Okay, so now we have the second example that this young girl was walking with a dog in a short skirt. Oh, that's really confusing. That who was in the short skirt? कौन जो है वो short skirt में थी, ये था the dog or the young girl. सही, तो आपको देखना है क्या? Once again, is it a cartoon that the dog will be wearing short skirt? No. Okay, so that's why you will have to see that it is non-human behavior or human behavior. सही, तो हम देखते हैं कि ये human behavior में है या non-human behavior में है. So who can be the one that who can be the one wearing short skirt? Okay, yes, that can be the girl. So the girl can be the one. So what we were learning, we were learning about the young girl was walking in a short skirt with a dog. It is right sentence because um, that you can see that when a short skirt is actually the human behavior quality. So that's why you have rotated with the girl. Means that the young girl was walking in a short skirt with the dog. Fine. So the dog cannot wear short skirt, okay, but the girl can wear it. So that's why when you have placed it in the right place, so that's why it is called misplaced modifier or placed modifier. Fine. Now the third example, you can see the book almost hit Majid's head that we bought online. Wow, what a wrong concept that Majid's head that we bought online. That Majid का जो सर है हमने ऑनलाइन खरीदा। Wow, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, because what could we buy online? Okay, we can buy Majid's head online, or we can buy the book online. Okay, so now you can see once again the human behavior or non-human behavior, which one is good or which one is suitable for you. So you can see that when this thing is suitable, I think if we write like this, so well, it will be appreciable. The book that we bought online almost hit Majid's head. Fine. So what you did, you have wrote in the right place. So now it is giving you quite clear meaning, because that time when the book almost hit Majid head that we bought online, that was a bit ambiguous. So that's why bring those sentences, okay, which you think is correct. Fine, but you will have to learn the right grammar first. I hope that you have understood this point. Okay, now
the word just, only. Okay, these words are also a bit confusing words for us. Okay, when we start speaking with them, we don't care about these words. जब हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इस किस्म के वर्ड्स तंग करते हैं कि वेल ये वर्ड्स कहाँ लगाने हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक जुमला है, ही वॉज जस्ट वेयरिंग अ पैंट। यहाँ पर अगर आप इस जुमले में देखें तो ये जुमला को क्या क्लियर कर रहा है? इसका मतलब है ही वॉज जस्ट वेयरिंग अ पैंट, ही वॉज जस्ट वेयरिंग अ पैंट। यहाँ पर इस जुमले में हमें ये क्लियर हो रहा है, so he was just wearing a pants. It means he was just a person who was wearing pants. The rest of the people, the rest of the staff, the rest of others were wearing something else, but not pants. Fine. Or you can say that he was just wearing a pant means this कि उन्होंने बाकी जो लोग थे उन्होंने अगर पैंट नहीं पहनी थी तो कुछ और पहना होगा, कुछ और ड्रेसिंग की होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये बनता है। But if you see, if you place this just with the object. So what could be the sentence and what could be the meaning? He was wearing just pants. Okay, now it is a bit typical to understand that what is the meaning of the sentence. इसका मतलब यहाँ पर निकलता है he was wearing just pants. उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी, means that he was not wearing shirt. Fine. So this time जब आपने just को जो है वो end में ऑब्जेक्ट के साथ प्लेस किया तो इसने काफी बिल्कुल ही अलग मतलब दिया। सही। और वो जो पहला जस्ट था उसने आपको बिल्कुल ही अलग मतलब दिया। ओके, sometimes what we do, we start speaking like this. हम कभी कभी इस किस्म के जुमले भी बोलते हैं, just he was wearing hat। तो यहाँ पर हमारे पास जो जुमला है just he was wearing hat, ग्रामर के तौर पर ये जुमला जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इस किस्म के जुमले जो है हम बोल लेते हैं as I told you in the beginning in every class that well in speaking each and everything is allowed। okay, लेकिन जब हम जाते हैं किसी और मुल्क में तो वहाँ पर हम जो है जब हम इंग्लिश बोलते तो हमारे इंग्लिश पर लोग जो है मॉकिंग करते हैं। इसकी वजह से वो सिर्फ ये कि हम अल्फाजों को कहाँ से कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड दैट विल हाउ टू यूज द वर्ड जस्ट एंड ओनली। ओनली को भी ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं आप लोग अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना हो तो। Okay, so now we have pre-modifier and post-modifier। ये हमारे पास दो और मसले हैं। प्री-मॉडिफायर क्या होगा कि पहले जब आपको पता है कि प्री-मॉडिफायर मीन्स हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, इसको प्री-मॉडिफायर कहते हैं that adjective is used before noun, adjective is used before noun, so it is called pre-modifier। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वर्ड है the brown dogs, हम ये नहीं कह सकते that dogs brown। okay, the brown dogs, तो brown जो है हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है डॉग को, और डॉग हमारे पास नाउन है। तो द ब्राउन डॉग्स। सही। सेम इस तरह से मेरे पास एक और एग्जांपल है दैट बैंक हैज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी। सही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इन दो जुमलों में हमारे पास क्या है कि वेल प्री मॉडिफायर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और जुमला देख देते हैं, गिव मी दैट ब्लैक कवर्ड शाइनिंग बॉक्स। सही। तो अब आप देख रहे थे बॉक्स हमारे पास नाउन है, बाकी जो हमारे पास किस तरह से जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, इट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर नाउन। फाइन। सो ये प्री मॉडिफायर था जो कि थोड़ा सा समझने का था। ओके, व्हाट अबाउट पोस्ट मॉडिफायर? दैट पोस्ट मॉडिफायर मींस वेल हम पोस्ट मॉडिफायर को कुछ ऐसे से डिफाइन करेंगे, एडवर्ब्स जो हमारे पास है वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। एडवर्ब्स always comes after words। ठीक है, तो एडवर्ब की जो जगह होती है वो हमेशा वर्ब के बाद होती है। जैसे कि सपोज हम कह सकते हैं कि वेल एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई तो करते हैं लेकिन एडवर्ब्स की जगह कहाँ होती है, वर्ब्स के बाद होती है। सही। हमारे पास यहाँ पर जुमला है जैसे कि सपोज एडवर्ब की काफ़ी किस्में हैं। सही। हम उन तमाम पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले ही ये सब कुछ सीख चुके हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जुमले हैं कि जैसन रॉय अ क्रिकेटर हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द स्क्वाड। ठीक है, तो एडवर्ब हमारे पास कहाँ पर आए, वो एंड में इस्तेमाल हुआ है। तो एडवर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द एडजेक्टिव। ओके, जैसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। so now this is a little portion to understand post modifier। post modifier को समझने के लिए आपको ये कहना है, जैसे सपोज मैंने कहा कि वेल ही रन्स फास्ट, तो रन्स फास्ट, रन क्या है हमारे पास, वर्ब है, और फास्ट क्या है हमारे पास, एडवर्ब है, और फास्ट जो है वो एडवर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है, बाद में आने वाला। ओके
ओके नाउ लेट्स लर्न द वर्ड डैंगलिंग मॉडिफायर। हमें ये समझना है क्योंकि आज की हमारी क्लास डैंगलिंग मॉडिफायर भी है, तो मॉडिफायर की एक किस्म डैंगलिंग भी है। व्हाट इज डैंगलिंग मॉडिफायर, एक सवाल है हमारे पास। ओके so now the word dangling modifier is also called dangling participle modifier। ओके तो डैंगलिंग पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं या डैंगलिंग मॉडिफायर भी इसको कहा जाता है। व्हाट इज डैंगलिंग मॉडिफायर, जब हम डैंगलिंग मॉडिफायर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या? Okay, when the word and phrase is not clearly stated in a sentence, when the word or phrase that is not clearly stated in a sentence, that is called dangling modifier or participle modifier. जब जुमलों में जो है फ्रेज या वर्ड जो है वो सही मीनिंग नहीं दे रहा हो, तो उसमें आप लोग उसको कह सकते हैं कि डैंगलिंग मॉडिफायर है। और उसमें कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं। वो चेंजिंग एडिशनल पार्ट भी हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, कुछ चीज़ें हटानी भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम चेंज भी करते हैं उनकी हिस्सों को। तो डैंगलिंग मॉडिफायर को अगर हम ये कहें तो डैंगलिंग मॉडिफायर इज एक्चुअली मिसप्लेस मॉडिफायर। ठीक है, ये एक मिसप्लेस मॉडिफायर की किस्म है। इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू मॉडिफाई। सही, इसके पास कुछ मॉडिफाई करने को नहीं होता, लेकिन कुछ ओमिशन मतलब कुछ हटाना, कुछ एडिशन, देखिए कुछ में जो है डालना, तो ये चीज़ें जो है हम उसमें कह सकते हैं कि इसकी वजह से डैंगलिंग मॉडिफायर बनता है। लेट्स लर्न विद सम एग्जाम्पल। इनको सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मेरे पास ये एग्जाम्पल है, लाफिंग लाउडली द मूवी वाज ओवर। नाउ अगर आप इस जुमले को देखते हैं, वंस अगेन यू आर कंफ्यूज्ड दैट हु वाज लाफिंग लाउडली, द मूवी वाज लाफिंग लाउडली। यहाँ पर हमारे पास एक जुमला है कि वेल द मूवी वाज लाफिंग लाउडली। क्या मतलब है इसका कि क्या मूवी जो है वो हंस रही थी? सही, वाज ओवर। तो यहाँ पर आप देखें कि वेल ये क्वालिटी किसकी है, ये किसका बिहेवियर हो सकता है? वंस अगेन नॉन ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर। इस बिहेवियर की जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वेल हाँ, यहाँ पर हम क्या गलती करें। लाफिंग लाउडली द मूवी वाज ओवर, इट इज रॉन्ग बिकॉज लाफिंग लाउडली द मूवी वाज ओवर। तो अब हमें देखना है कि वेल यहाँ पर, क्योंकि हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो हम जल्दी में बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि वेल क्या हुआ था। सही, सो हु इज अ पर्सन हु वाज लाफिंग लाउडली? जरूर ये कोई शख्स होगा जो कि हंसते हंसते जो है निकला था जब मूवी खत्म हुई। सही, तो यहाँ पर हम किसी भी शख्स का नाम लगा सकते हैं। that Nasir was laughing loudly, they were laughing loudly as the movie was over, जब मूवी खत्म हुई। सही, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ एडिशन किया, किसी नाउन का एडिशन किया, किसी एडजेक्टिव को भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। Okay, now with the second example, wearing a hat in the sun. Wearing a hat, the sun does not hit my face. Okay, wearing a hat, यहाँ पर हमारे पास एक जुमला है। Okay, so what is confusing here? That wearing a hat, the sun does not hit my face. तो यहाँ पर wearing a hat the sun मतलब क्या, सन ने टोपी पहनी हुई थी, ये अजीब सी बात हो गई। सही, so once again you will have to clear that well sun cannot wear the hat, so that's why what to do, it is actually human behavior, it is not non-human behavior. So what to do, you will say like this, that wearing a hat, I am protected from the sun. Wearing a hat, okay, the sun does not hit my face। आप उसको change कर सकते हैं। I well when I was wearing a hat, the sun does not hit my face। तो आपको जो भी चेंजिंग लानी है, बात को क्लियर करके बताना है। अनक्लियर जो वर्ड्स होंगे वो आपके डैंगलिंग मॉडिफायर में होंगे। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट दिस वर्ड टू। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक जुमला है इनकरेक्ट सेंटेंस में, जॉगिंग इन द पार्क अ डॉग बिट मी। ओह माय गॉड, ओके सो नाउ व्हाट डू यू सी हियर, jogging in the park a dog। if you say that, well, what I underline here, I underline that jogging in the park a dog, if you pronounce this word rapidly, so people who are called listeners, they will make mistakes in understanding your words। That who was jogging? A dog? ठीक है, ये कार्टून तो है नहीं कि वेल डॉग जो है वो जॉगिंग कर रहा हो। सही, तो क्या करना है आपको, जॉगिंग द पार्क, ये ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन बिहेवियर है, और डॉग जो है उसका बिहेवियर क्या है, काट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेल हु वाज एक्चुअली जॉगिंग, द डॉग जॉगिंग और द ह्यूमन वाज जॉगिंग, समवन वाज जॉगिंग। ओके, सो यहाँ पर हमें देखना है कि वेल जॉगिंग द पार्क डॉग हिट बिट मी, इसको हमें सही करना है। और वो क्या हो सकता है, दैट व्हाइल आई वाज जॉगिंग इन द पार्क अ डॉग बिट मी। आपको मतलब बिल्कुल सही समझाने के लिए जुमलों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट व्हाइल आई वाज जॉगिंग इन द पार्क, जबकि मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा था, अ डॉग बिट मी,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वेल आपको मतलब सही लगाना है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। सही, या कुछ चीज़ें जो कि गैर ज़रूरी हों उनको आपको हटानी है। तो जॉगिंग द पार्क आई गॉट बिटन बाय अ डॉग, ये भी कह सकते हैं कि पार्क में जॉगिंग करते हुए मुझे जो है वो काटा गया। ठीक है, डॉग ने मुझे काटा। तो यहाँ पर ये जुमला क्लियर हो गया आई होप। उसके बाद हमारे पास एक और जुमला है इनकरेक्ट सेंटेंस में। इन द फिश बाउल सैली फेड द फिश। ठीक है, जो फिश बाउल है उसमें सैली ने जो है मछली को खिलाया। तो अब इन द फिश बॉल सैली फेड द फिश, यहाँ पर अगर आप देखें इन द फिश बॉल सैली, मतलब फिश बॉल के अंदर सैली मौजूद थी तो उसने फिश को खिलाया। तो अजीब लग रहा है कि वेल वो खुद फिश बॉल में कैसे मौजूद हो सकती है। सही, सो इट इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। व्हाट टू डू, आपको सही करना है। इन द फिश बॉल सैली फेड द फिश गलत है, तो आप ये कह सकते हैं सैली फेड द फिश इन द फिश बॉल। ठीक है, इन द फिश बॉल। तो यहाँ पर आपने देखा कि सैली फेड द फिश इन द फिश बॉल, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन क्वालिटी थी तो हमने उसी के साथ इसको। So I hope that well, this sentence has almost clear your words that well how can you make right sentences by using dangling and correct modifiers। सही, misplaced modifiers को, dangling modifiers को आप लोग किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको बता रही है। उसके बाद हमारे पास एक और जुमला है that they were talking loudly। अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है लाउडली क्या है, लाउडली हमारे पास एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वर्ब को एडिशनल पार्ट है। इसी तरीके से मेरे पास है having arrived late for class a lower grade was given। Having arrived late for class a lower grade was given। Once again we are a bit confused that well, who arrived late for class and who was given lower grade। किसको लोअर ग्रेड दिया गया, कौन आया, तो यहाँ पर हमारे पास ये गलती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सुधारने के लिए हमें ये जुमला सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर ये कहें that having arrived late for class Tina was given a lower grade। सही, तो आप किसी का भी नाम जब लगाएंगे तो आपका जुमला ऑटोमेटिकली सही मतलब देगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज है कि कौन, किसको लोअर ग्रेड मिला, तो आपने इस जुमले को बिल्कुल सही कर दिया। ओके, सेकेंड वन, आफ्टर रीडिंग द लॉ द डिसीजन स्टिल मेड नो सेंस। मीन यहाँ पर आपको तो समझा दूँ, आफ्टर रीडिंग द लॉ, ये आपके पास एक जुमला है। आफ्टर रीडिंग द लॉ, लॉ को पढ़ने के बाद द स्टोर ऑनर या कोई भी और नाम लगा सकते हैं felt that the decision still made no sense। सही, तो अब आपने क्या किया कि इसमें आप कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द लॉ, ठीक है, आई फेल्ट दैट द डिसीजन स्टिल मेड नो सेंस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आफ्टर रीडिंग द लॉ द डिसीजन स्टिल मेड नो सेंस, so it is ununderstandable। Okay, it is ambiguous। So that's why when you speak English, at that time your English should be quite clear। सिर्फ फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलना नहीं होता, आपको देखना है कि वेल क्या आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ओके, देन वी हैव सम मोर सेंटेंसेस हियर। रीडिंग द रेगुलेशंस द डॉग डिड नॉट एंटर द पार्क। रीडिंग द रेगुलेशंस द डॉग, सही, तो अगर आप देखें कि reading the regulations the dog did not enter the park, that who was reading the regulations, the dog। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या था, डॉग जो है वो रीडिंग द रेगुलेशन कर रहा था, ये गलती है। तो अगर आप इसको इस तरह से कहेंगे, वेल आफ्टर रीडिंग द रेगुलेशंस आई डिड नॉट एंटर द पार्क विद माय डॉग, ओके, और ही डिड नॉट एंटर द पार्क विद हिज डॉग। So you can make thousands of sentences like this after adding some information। Okay, adding some information। उसके बाद हमारे पास एक और जुमला है इनकरेक्ट सेंटेंस में। बाइंग सम शर्ट्स द सेल्समैन गेव अ डीप लुक ऑन एवरीवन। अब यहाँ पर सवाल ये है, चलिए पहले मैं इसको गलत पढ़ के सुना देता हूँ। बाइंग सम शर्ट्स द सेल्समैन, सही, कि शर्ट्स खरीदते हुए सेल्समैन। अब सेल्समैन क्यों शर्ट खरीदेगा, एक सवाल है कि वेल व्हेन ही इज सेलिंग द शर्ट इन हिज ओन शॉप, सो व्हाई विल ही बाय शॉप, सो व्हाई विल ही बाय some shirts from the shop। So that's one of the biggest mistake। You will have to correct it। कि buying some shirt the salesman gave a deep look on everyone। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही करना जुमले को कि क्यों खरीदेगा और कौन शर्ट खरीद रहा है, तो ये एक सवाल है। तो अब अगर इस जुमले को मैं कुछ ऐसे कहूँ that while Ahmed was buying shirts the salesman gave a deep
deep look on everyone. Okay, I hope well it is clear that while Ahmed was buying some shirts, the salesman gave a deep look on everyone. Fine. तो यहाँ पर आपको बात क्लियर करनी है. Dangling modifier means that you will have to bring additional information. If you want to omit some words from the sentence, you can use it. This part that will dangling modifier का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So जो है अगर हम बेहतर तरीके से सीखेंगे तो हमारे जुमले काफ़ी बेहतर हो सकते हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास मिसप्लेस मॉडिफायर की कुछ एग्जांपल्स थे. that we almost ate all of the sandwiches. Okay, yeah, we only, we nearly, we barely, we almost, तो ये सारे जुमले एक ही बार है. अगर हम इसको कहें कि we almost ate all of the sandwiches, क्या जुमला सही है? So once again I will repeat my sentences that will now. अगर हम almost को verb के बाद लगा लेते हैं means with all, then we can bring the right sentence. कैसे? जैसे मेरे पास जुमला यहाँ पे लिखा है we ate almost all of the sandwiches. We almost ate all of the sandwiches, ये गलत कॉन्सेप्ट है. और we ate almost all of the sandwiches, ये सही सेंटेंस है. नीचे मैंने वजाहत की है. I described the two sentences that were almost ate and ate almost. That okay, almost will be used with all. Fine. So now you have learned good word that will how will you misplace, how will you place the misplaced word. Okay then, chasing a squirrel up a tree. My grandfather saw her cat fluffy. सही. अब यहाँ पर मेरे पास जुमला है कि chasing her squirrel up a tree, my grandfather. सही, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो थी वो भी जा रही थी. तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें कौन जो है स्क्विरल, वो जो है चेजिंग अ ट्री, ग्रैंडमदर जो है वो स्क्विरल के पीछे कर रही थी या स्क्विरल जो है वो ग्रैंडमदर के पीछे कर रही थी. यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग है. सही. सॉ हर कैट फ्लफी, या कैट जो है वो कर रही थी पीछा. तो ये तीन जो है हमारे पास थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं. इनको देख सकते हैं कुछ इस तरह से that my grandmother saw her cat Fluffy chasing a squirrel up a tree. सही. तो यहाँ पर इस जुमले में हमें एक सही मतलब मिल रहा है. फाइन. तो ये जो मेरे पास फ्रेज है, इस पूरे फ्रेज को जो है मैंने सही राइट प्लेस पे जब ले आया तो मेरा जुमला एक सही मतलब दे रहा है. ओके, उसके बाद over this time, what did you realize that well, who was chasing a squirrel? Grandmother was chasing a squirrel, okay, or the cat was chasing a squirrel. So yeah, the cat was chasing a squirrel. So that's why आपने क्या कर दिया that my grandmother saw her cat Fluffy chasing a squirrel up a tree. यहाँ पर आपने पूरे फ्रेज को जो है वो सही तरीके से आप जब इस्तेमाल किया तो आपको पता चला कि वेल मतलब ये बन रहा है. वरना आप ये देख रहे थे कि ग्रैंडमदर जो है वो चेजिंग कर रही थी या ग्रैंडमदर के पीछे जो है वो स्क्विरल जो है वो चेजिंग कर रहा था. ये इसलिए गलत हो रहा था जुमला. और फिर इसके बाद हमारे पास जुमला है शी wore a pink summer hat on her head which was much too big. Okay, wow, that's very you know bad sentence that well you two are seeing here on the screen. That she wore a pink summer hat on her head which was much too big. अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो मैंने हर हैड विच वॉज मच टू बिग तक जो है वो रेड से जो है वो लिखा है. इसकी वजह ये है that her head which was much too big, कि उसका सर बहुत बड़ा था. सही. या हेड बड़ी थी. थिंक समर हेड बड़ी थी. which was actually that was much too big. this the head or think summer head. Okay, so yeah, आप कह सकते हैं कि well she wore a pink summer hat which was too big. You have to omit this word. her head को हटा दें कि उसने जो टोपी जो पहनी हुई थी वो टोपी जो है बड़ी थी. सही. जाहिर है तो उसने टोपी पहनी थी वो सर पे ही पहनेगी. तो अब अगर आपने कहा she wore a pink summer hat on her head which was much too big, it means well her head was much too big, so that's why it was big wrong. So that's why you will have to correct it by omitting this word. ये जो आपके पास जो words हैं इनको omit करना भी सीख दीजिएगा ताकि आपको misplaced modifier, dangling modifier और modifier में बिल्कुल सही तरीके से तमीज़ हो. I hope that you people have learned this lecture perfectly, and now if you are given the list of modifying, so you can modify all the misplaced and dangling modifiers.
आप बेहतर तरीके से जो है मिसप्लेस मॉडिफायर्स को, डैंगलिंग मॉडिफायर्स को बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं। एंड यू कैन डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आप तमाम बच्चों को समझ आए कि किस तरीके से हमने जो है इसको मिसप्लेस से प्लेस किया है। ठीक है, ओके। जैसे डैंगलिंग मॉडिफायर्स में हमने खुद से एडिशन की है और सब्ट्रैक्शन की है, मतलब फॉर्मेशन की है। So I hope that it is clear to you. Now we will see once more in the same class, okay, with some new lessons, okay, and we will be learning new and new things in this class. Thank you.